चलिए, खुशबू कुमारी, कीप योर कैमरा ऑन. Let us finish the reading of Animal Farm and finish the lesson today. चलिए हम शेयर करें, आप पढ़ेंगे इसको. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. In the last class, we saw how the 7 rules were made. So this is very important. So these were the 7 unalterable rules. It means these rules will not be changed. But then how you saw that at the end of the story, all these rules were reduced to just one rule. Somebody please read this. Read the 7 rules. First rule: whatever goes upon 2 legs is an enemy. Please explain. मैम ये बोलना चाहता है लाइन की मतलब दो पैर वाले आदमी जो होते हैं वो मतलब दुश्मन होते हैं जानवरों के. 2 legs. ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिस्टर जॉन्स जो थे उनको अच्छे से टेक केयर नहीं करते थे, खाना कभी देते थे कभी नहीं देते थे, इसलिए वो लोग का रूल हुआ कि हाँ जो 2 legs होते हैं वो एनिमी होते हैं हम लोग को. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट. whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. मैम ये लाइन ये कहना चाहता है कि मतलब 4 legs जब 2 legs वो फर्स्ट नियम जो था उसका रूल कि 2 legs इज एनिमी, तो हैन और कुछ और मतलब जो छोटे छोटे मतलब बर्ड्स थे तो उनको लगा कि हम लोग भी इनके दुश्मन हो गए, तो इसलिए उस रूल को रेक्टिफाई करके whatever goes upon 4 legs मतलब कि मतलब जो इनके पास पंख भी है वो भी मतलब एनिमल के दोस्त हैं, और 4 लेग हैं जिनके वो सब दोस्त हैं यहाँ एक दूसरे के. और थर्ड रूल है मैम नो एनिमल शैल वियर क्लोथ, और एनिमल को कपड़े नहीं पहनने हैं ह्यूमन की तरह. और फोर्थ रूल है मैम नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड, कि एनिमल को बेड पे नहीं सोना इंसानों की तरह. और फिफ्थ रूल है नो शैल ड्रिंक अल्कोहल, और एनिमल को अल्कोहल नहीं पीना है जैसे इंसान पीते हैं. एंड रूल नंबर 6 नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, और एनिमल को अपने जैसे एनिमल को किल नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करना है. और लास्ट जो रूल था ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब सारे एनिमल जो है सब इक्वल है. अब बताइए किस किस तरह से हाउ वर दीज 10 अनऑल्टरेबल रूल्स चेंज्ड, किस तरह से कहानी प्रोग्रेस करती है, एंड व्हाई डिड नेपोलियन चेंज ऑल दीज रूल्स. मैम क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि नेपोलियन भी मतलब ह्यूमन की तरह कपड़े पहनने लगता है, वो बेड पे सोने लगता है, वो ड्रिंकिंग करता है, और वो मतलब वो क्या बोलते हैं डॉग्स को बोलता है कि जो उसके खिलाफ कुछ बोले तो उसको वो काट के मतलब वो जिंदा उसको वहीं पे ऑन स्पॉट मतलब उसको मार दे. नेपोलियन के कारण सारा रूल को फिर से रिड्यूस किया गया क्योंकि वो मतलब इंसान की तरह बनने लगा था इसलिए. ठीक है. लास्ट में कौन सा रूल एक रह गया था? व्हाट वाज द लास्ट रूल व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड? ऑल एनिमल्स आर इक्वल मैम. नहीं, लास्ट में बस एक रूल रह गया था, 4 legs गुड एंड 2 legs बेटर. बेटर, यस मैम. चलिए इसको पढ़ लीजिए. At first the revolution, read this. कोई पढ़ो. पढ़िए. At first, the revolution seems to be a success. All of the animals, directed and supervised by the pigs, work hard to bring in the harvest. But there are indications from the beginning what does it mean? In the beginning, सब कुछ ठीक चल रहा था. Everything was going on in a very perfect way. But the animals were not doing any kind of work. They were only supervising. And all the animals were working very hard to bring in the harvest.
and harvest was very good that year. But there are indications. Indications का मतलब क्या होता है? दर्शाना मैम, दर्शाना या पढ़ो read. Yes. But there are indications from the beginning that the pigs treat themselves especially. They remain the supervisor doing no physical labor and they take extra food, mild and windfall apples for themselves instead of sharing with the others. Meanwhile, Jones, with the aid of his यहाँ पर neighbor, इस पैराग्राफ का मेन चीज क्या है? सब कुछ अच्छा चल रहा था, everything went on in a very perfect way, but there were some problems in the beginning which the animals noticed. Indications थे, ऐसा कुछ हो रहा था वहां जो कि नहीं होना चाहिए, शुरू से ही ऐसा एनिमल्स को आभास था. There were indications, there were some animals which observed, they were noticing that pigs were eating the best of food and they were treating themselves specially. They were giving special treatment to themselves. Read. Meanwhile, Jones, with the aid of neighbors, tries to retake the farm. They are driven off at the Battle of the Cowshed by the military tactics of Snowball and the strength of Boxer. Both are decorated as heroes for their roles in the victory. So what are we talking about here? Battle of Cowshed का मतलब क्या होता है? एक बार तो मिस्टर जोन्स को हटा देते हैं एनिमल्स, तो क्या मिस्टर जोन्स दोबारा फिर अटैक करते हैं, so that he wanted to come back to his he wanted to take back his manure farm. तो सेकेंड टाइम जब मिस्टर जोन्स चाहते हैं कि अपने नेबर्स से मिलकर के अटैक करते हैं, तो दूसरी बार भी उनको एनिमल्स क्या करते हैं? दे चेस हिम अवे. और फिर उसमें क्या होता है? स्नोबॉल की टैक्टिक्स और बॉक्सर ने इस बैटल ऑफ काउशेड को सक्सेसफुल बना दिया और दूसरी बार भी मिस्टर जोन्स को एनिमल फार्म से हटा दिया गया. पढ़िए. Both are decorated as the heroes of their roles in the victory. A power struggle दोनों को अवार्ड किया गया, स्नोबॉल को और बॉक्सर को. A power struggle for control of animal farm develops between the Snowball and Napoleon, and it culminates with the buildings of a windmill. When the animals उसके बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ काउशेड के बाद एक पावर स्ट्रगल शुरू हुआ कि कौन एनिमल फार्म को टेक ओवर करेगा, हु विल बिकम द लीडर. और फिर डिसाइड हुआ कि विंडमिल की तैयारी शुरू हो जाए. द विंडमिल वाज डिसाइडेड बाय स्नोबॉल और सारे के सारे एनिमल स्नोबॉल को वोट करने लगे, इसलिए कि स्नोबॉल अच्छा काम कर रहा था, विंडमिल की प्लान बना रहा था और एनिमल फार्म में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर को लाने के लिए ये विंडमिल बन रहा था, टू रिस्टोर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जब नेपोलियन ने देखा कि सारा वोट स्नोबॉल की तरफ जा रहा है, तो उसने क्या किया? अपने कुत्तों को अनलीश कर दिया. अनलीश का मतलब क्या होता है? खोल दिया. Unleashes the 9 dogs he has been training secretly to follow his orders without question. तो बिना ऑर्डर फॉलो करना है, सवाल नहीं पूछना है. स्नोबॉल इज चेस्ड ऑफ और स्नोबॉल को चेस ऑफ कर दिया गया उन कुत्तों के द्वारा और बड़ी मुश्किल से, barely escaping the jaws of the dogs, और बड़ी मुश्किल से वो स्नोबॉल अपनी जान को बचा पाया. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो. In a turnabout, 1 minute, खुशबू तुम पढ़ो. In a turnabout, Napoleon ordered that work on the windmill begin. The work is क्या हुआ? स्नोबॉल को हटा दिया और फिर ये बोलता है कि विंडमिल, जो स्नोबॉल का प्लान था, इसको अपना प्लान बना के बोलता है कि विंडमिल का काम शुरू किया जाए.
The work is default and the animals suffer in the proper process when a storm blows the windmill down. Napoleon burns the exhaust snowball and Exiled snowball. condemns him as an Condemns him as an enemy. तो जब नेपोलियन ने डॉग्स के द्वारा स्नोबॉल को हटा दिया एनिमल फार्म से और फिर ऑर्डर करता है कि विंड मिल का काम शुरू किया जाए और प्रोसेस शुरू हो जाता है, सारे एनिमल बहुत इस मुश्किल काम को करने में जुट जाते हैं और काफी परेशानी उठाते हैं। और तभी क्या होता है, सबकी मेहनत को पर पानी फिर जाता है जब एक आंधी तूफान के द्वारा विंड मिल फिर से क्या हो जाता है, तूफान में खराब हो जाता है। और इस बार क्या होता है, ये बताता है कि जो स्नोबॉल है वो साजिश करके इसको खराब करवाया है और उसको एक दुश्मन घोषित कर देता है। नेपोलियन ब्लेम्स द एक्साइल्ड स्नोबॉल, एक्साइल का मतलब होता है जिसको निकाल दिया गया, स्नोबॉल एंड कंडेम्स हिम, और उसको बता देता है कि उसको इसकी बहिष्कार करते हुए कहता है कि वो एक दुश्मन है। पढ़ो। Napoleon exploits the animals. What is the meaning of exploit? नहीं मालूम है, निकाल देना। नहीं, राजवर्मा, what is the meaning of exploit? मैम दहशत फैला देना मैम, दहशत नहीं, किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट। Fear that Jones will return and their fear of his friends dogs to consolidate his power. He used एक मिनट, पढ़ती बिल्कुल तुम नहीं हो ना, सेकेंड ईयर में आप आ गए हैं, रीडिंग नहीं लगाते हैं, कंटेंट कब से दिया हुआ है आपको, नहीं पढ़िएगा तो यही हाल होगा। मीनिंग की बात छोड़ दीजिए, पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो नेपोलियन एक्सप्लॉइट करता है एनिमल्स को और डराता है, और वो सारे डरते हैं उनके डॉग से भी कि कोई आवाज उठाएगा तो उसको वो मार देगा। और ये दहशत भी फैलाता है कि जोन्स वापस आ जाएगा और अपने पावर को बचाने के लिए वो जानवरों पर को एक्सप्लॉइट करता है। और किसको यूज करता है? यूजेस स्क्वीलर। स्क्वीलर कौन है? जो कि उसके बारे में मीडिया पर्सन है, उसके बारे में बताता रहता है। उसको यूज करता है कि तुम झूठ बोलो और एनिमल्स को कन्विंस करो दैट जो चीज तुम देख रहे हो वैसा नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो वैसा नहीं है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो तुम्हारे ही हित के लिए कर रहे हैं। यस, रीड। आज इसको कंप्लीट कर लेना, रीड पढ़िए इसको। animals and convince them that things aren't what they seem. वो हो चुका, आगे पढ़ो। As work on the second windmill begins, Napoleon and the pigs become more and more corrupt. They change the commandments, move into John's house, and drink whiskey. Napoleon even kills other animals who dare to stand up to his authority. The second Somebody please explain this paragraph. Explain. सेकंड में विंड विल आता है, फिर नेपोलियन को वो उसका
उसका जो कमिटमेंट होता है वो वहां से मूव कर देता है, हटा देता है। नेपोलियन का जो कमिटमेंट होता है। और क्या होता है? जॉन्स के घर पे जाके और वो मतलब कि ड्रिंक और बिक्सी करने लगता है। क्या करता है? ड्रिंक। चलिए, somebody read the second paragraph, the third paragraph. द सेकेंड। कोई और पढ़ो। और कोई पढ़ो। राजेश कुमार है, पवन है और प्रशांत है। कैमरा ऑन नहीं करते हैं तो ये लोग को निकाल रहे हैं रूम से। फिर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप निकाल दिए जाइएगा। यस मैम। मतलब कि हम मैम नेटवर्क स्लो है मैम, कनेक्टिंग होता है, इसीलिए कर देता हूँ मैं। तो फिर भाई आप रूम से निकलिए। हम लोग तो अलाउड नहीं है कि आप लोग को क्लास दें ऐसे। जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, क्लास मत करिए प्लीज, जाइए। जो करना है तुम करो, पढ़ाई के अलावा तुमको और कुछ करना है करते रहो। चलिए पवन पढ़िए। रीड। पढ़ क्यों दे रहे हो? गाना वाना सुन रहे हो क्या? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है पवन तुमको? बोल देते हैं, हमको लगा कि प्रशांत के बोले थे मेरा। जाओ तुम, जो करना है करो। राजवर्मा में पढ़िए। Yes, ma'am. क्लास को तमाशा बनाने तो हम देंगे नहीं। पढ़िए। The second windmill is blown up in an attack by Frederick after he steals wood from animal farm by paying for it with counterfeit money. But Napoleon pronounces this defeat to be great victory, and the work begins on a third attempt to build a windmill. पढ़ो, आगे पढ़ो। None of the promises of leisure time and comfort come true. No heat or electricity in the barn. No machine to do their hard work. In fact, life grows harder for all of the animals except the pigs. And the food is scarcer. When a boxer, the hardest worker on the farm, is a hard Napoleon, sells him to the horse slaughter. The scholar conveys the other that the boxer died in the hospital after getting the best treatment. Old Major's prediction about Boxer has come true, but it is Napoleon who is the villain. In the ends, the pigs completely subvert the ideals of animalism. They are ये मतलब कि पूरा उलट देता है। एनिमलिज्म की जो सोच थी उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, सबवर्ट कर देता है। yes, they are the new master. They walk on two legs. They violate and change each of the 7 commandments. Ultimately, these commandments are erased and replaced with only one. All animals are equal, but some animals are more equal than others. In the final scene, Mr. Plinkton comes for a tour, and Napoleon announced some changes. The name is changed back to manor form, and a new level of understanding is reached between the pig and man. The book ends when someone cheats in a card game. The animals watching from outside cannot tell the difference between the pigs and the man.
तो क्या एंड में क्या हुआ, नेपोलियन ने वापस से, वो अपने बिल्कुल इंसान बन चुका था और वो वापस से एमेन्योर फॉर्म का नाम लगा दिया, और वो कार्ड गेम में वो चीटिंग कर रहा था, और एनिमल्स जो बाहर से जो नाराज थे नेपोलियन से, वो बाहर से देख रहे थे कि नेपोलियन चीटिंग कर रहा है। और उनको पता भी नहीं चला और ये था कहना मुश्किल हो गया है कि कौन पिग है और कौन इंसान। हाँ। और इसका एंड यही है कि फिर से एक बगावत प्लान होता है और नेपोलियन को हटाने के लिए रेवोल्यूशन, अगेन द रेवोल्यूशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली एनिमल्स इसमें सक्सेसफुल भी हो गए होंगे, और वापस इस बीच मिस्टर जोन्स तो कहीं भी मर गए हैं, लेकिन एनिमल फार्म की जो लाइफ थी वो एनिमल की तरह ही रह गई। मैम इसके आगे इस कहानी को मतलब पार्ट 2 नहीं आया है इसका मतलब? नहीं, बस यही पर एंड है, यही एंड है। अब यहाँ पर डिटेल में कैरेक्टर लिस्ट है ऑलरेडी, आपकी किताब में भी मॉड्यूल में होगा, उसको पढ़ लीजिएगा जरूर, जैसे पढ़ ही लो, मेरे सामने पढ़ो पहले इसको। कार्ल मार्क्स, difference between the pig and the man. Characters list. Karl Marx, old major founder of communism, founder of animalism. Both of those ideas never worked. Second, लोग Joseph के आइडिया Stalin. कभी वर्क नहीं किए, कार्ल मार्क्स का भी जो थिंकर थे उनके भी कभी वर्क नहीं किए, और ओल्ड मेजर का भी कभी वर्क नहीं किया, जोसेफ स्टालिन। Joseph Stalin. Napoleon, ruthless leaders, betrayed the people, would do whatever it took to complete something. Leon Trotsky. जोसेफ स्टालिन भी वैसे ही था, रूथलेस मतलब कि विकेड क्रूएल लीडर था, लोगों को धोखा देता था और अपने हित में सब कुछ करना चाहता था, पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। Leon Trotsky, snowball forced into exile, brilliant speech makers. Tsar Nicholas II, Mr. Jones only represented लियोन ट्रॉट्स्की 30. कौन है? स्नोबॉल है, जो कि वो फोर्स्ड, उसको निकाल देगा था, फोर्स्ड इनटू एक्साइल। ही इज अ ब्रिलियंट स्पीच मेकर, दोनों लियो ट्रॉट्स्की और स्नोबॉल। Snowball. Mr. Jones only represented the rich, consume and did not produce. KGB, dog enforcers, used to the fear of the peoples to their advantage, could carry out any orders no matter how cruel. Napoleon, the pig who emerged as a leader of an animal farm after the rebellion, based on Joseph Stanley. Napoleon used military force, his 9 loyal attack dogs to intimidate the other animal and consolidate his power. In his supreme craftiness, Napoleon proved more treacherous than his counterpart Snowball. मतलब बहुत ही करप्ट, ट्रेचरस मतलब होता है ऑफ इल कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर। Snowball, the pig who challenged Napoleon for control of animal farm after the rebellion. Based on Leon Trotsky, Snowball is intelligent and passionate, equivalent and less subtle and devious than his इलोक्वेंट मतलब counterpart. होता है अच्छा बोलने वाला, जैसे कि उसमें ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, जो इलोक्वेंट, गुड इन स्पीकिंग, शांत रहता था लेकिन बहुत ही काम का इंसान था, और लियो ट्रॉट्स्की और स्नोबॉल इज रिप्रेजेंटिंग हिम। Napoleon Snowball seems to win the loyalty of the other animals and cement his power. Boxer, the cart horse whose incredible strength, dedication, and loyalty play a key role in the early prosperity of animal farm and the late completion of the windmill. Quick to help but rather slow-witted, Boxer so much
devotion to animal farm ideal, but little ability to think about the independently. He naively trusts the pigs to make नहीं, all. मतलब कि वो बिल्कुल इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था पिग्स को, और वो इसलिए कहता था कि नेपोलियन इज ऑलवेज राइट. Yes, ma'am. His two mottos are, I will work harder and the Napoleon is right. Squealer, the pig who spread Napoleon propaganda among the other animals. Squealer justified the pig's monopolization of research and spread false statistics pointing into the farm success. Orwell used Squealer to explore the way in which those power often used to rhetoric and language to the twist the truth and again maintain the social and political control. मतलब ऑरवेल ने यूज किया है कि किस तरह से बातचीत करके किसी को ब्रेन वॉश किया जा सकता है, बातों के द्वारा सच को झूठ, झूठ को सच करके, और अपनी बात को सबके सामने, चाहे जितना भी झूठ क्यों ना हो, किसी भी बात को जनता तक पहुंचाना, चाहे वो किसी भी तरह से पहुंचाना, बाय हुक और क्रुक. Old Major, the prize-winning boar, whose vision of socialist utopia served as the inspiration for the rebellion. 3 days after describing the vision and teaching the animals and the songs, Beast of England, Major died. Major died, leaving Snowball and Napoleon to struggle to control of his legacy. Orwell based major on both the German political economist Karl Marx and the Russian revolutionary leader Vladimir Ilyich Lenin. Clover, a good-hearted female cat hound. मैम स्क्रॉल अप कीजिए ना मैम, ऊपर चलिए. 6 point. Clover, a good-hearted female cat horse and the boxer's close friend. Clover often suspects the pigs of violating one or another of the 7 commandments, but she repeatedly blames herself for misremembering the commandments. Moses, वो देख रही थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर को लगता हो सकता है कि मेरी याददाश्त खराब हो गई है, और हो सकता है ऐसे ही कहा गया हो. Moses, the tame raven who spread a story of Sugar Candy Mountain, the paradise to which animals supposedly to go when they die. Moses play only a small role in the animal farm, but Orwell uses him to explore how communism exploits religion as something with which to pacify the oppressed. Pacify the oppressed, किस तरह से रिलीजन को यूज किया जाता है उन लोगों को शांत करने के लिए, जिनको जो सताए गए हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए, उनको शांत करने के लिए. Molly, the Van Flatley mare who pulls Mr. John carriage. Molly creates the attention of human beings, the lost being groomed and pampered. She has a difficult time with her new life on Animal Farm as she misses wearing ribbons in her mane and eating sugar cubes. She represents the petite bourgeoisie that fled from Russia a few years after the That fled from Russia a few years after the Russian Revolution. Benjamin, the long-lived donkey who refused to feel inspired by the rebellion. Benjamin firmly believed that life will remain unpleasant no matter who is in charge. Of all the animals on the farm, he alone comprehends the change that takes place, but he seems either unwilling or unable to oppose the pigs. Muriel, the white goat who reads the 7 commandments to Clover. Whenever Clover suspects the pigs for violating for their prohibitions. Mr. Jones, the often drunk farmer who runs the Mr. Frederick, the tough studio operator of Pinchfield, a neighboring farm based on Adolf Hitler, the ruler of Nazi Germany in 1930s and 1940s. Mr. Frederick proved an untrustworthy neighbor. Mr. Plinkton, the easygoing gentleman farmer who runs Foxwood, a neighboring farm. Mr. Frederick, bitter animal. Mr. Plinkton represents the capitalized government of England and the United States.
Yeah. Mr. Wimper, the human solicitor whom Napoleon hires to represent animal farm in human society. Mr. Wimper entry into the farm, initiate contact between animal farm and human society, alarming the common animals. JC and Bluebell, two dogs, each of whom gives birth early in the novel. Napoleon takes the puppies in order to educate them. Minimus, the poet picks who writes verse about Napoleon and paints the banal patriot song Animal Farm, to replace the earlier idealistic hymn I'm Be Stopping Land, which old major passage on to the others. This is all about Animal Farm, characters, story. एक्चुअली पहले ही आप कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद जो होगा, कोई ऐसा लेसन है जो समझ में नहीं आया है, या लेट अस रिवाइज विद क्वेश्चन आंसर्स और प्रेजेंटेशंस. अब तो प्रेजेंटेशन का ही टाइम आ गया. ग्रामर पोर्शन बाकी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस वो करना है. सारे लेसन्स का क्वेश्चन आंसर्स करना है. यस मैम. हाँ, क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी सब डले हुए हैं. देखिए आप इसमें भी हाइलाइट्स क्या हाइलाइट्स पढ़ लो, ये जरूरी है. हाइलाइट जान जाओगे कहीं से कोई एमसीक्यू आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा. Old measure suggests 7 rules that all farm must follow. Second, Mr. Jones is driven out of the farmhouse by the animals. Third, the pigs take over as a masters, and they start living as a man. Boxer does most of a heavy labor and adopts the motto, "I will work harder." Boxer, who believes that he has unintentionally killed a stable boy in the choice, express he regret at a top. जब बैटल ऑफ काउशेड हुआ था, तो उसमें बॉक्सर के द्वारा एक छोटे से लड़के का डेथ हो गया था अफरा तफरी में, केओस में, जो भगदड़ जो मची थी. और वो फील करता है कि मेरे हाथों द्वारा किसी की जान चलेगी, और वो बहुत ही हर्ट फील करता है और सोचता है कि बहुत पछतावा उसको होता है कि मेरे वजह से किसी की जान चली गई. Snowball tells him not to feel guilty, asserting that the only good human being is a dead one. After the banishment of और स्नोबॉल समझाता है उसको कि तुम गिल्टी क्यों फील कर रहे हो, अच्छा ह्यूमन बीइंग वही है जो मर चुका है, जो मर गया वो अच्छा हो जाता है. तो इसको स्नोबॉल ने समझा दिया. After the banishment of Snowball, the animals learned that the Napoleon support the windmill project. The pigs begin living in the farmhouse, and the rumor has it that they even sleep in beds, a violation of one of the 7 commandments. Napoleon said that can detect Snowball's presence everywhere, and whenever something appears to go wrong by chance, Snowball receives the blame. And a boxer who believes that he has unintentionally killed a stable boy in the chest, expressed he regretted the talking alive, even though it is human one. Snowball tells him not feel guilty, asserting that the only good human is the dead one. The pigs begin living in the farmhouse. अब ये कितने क्वेश्चंस हैं? शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स. ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आप प्रेजेंटेशन में करिए तो अच्छा होगा. बच्चों को मैं बता दूंगी हम कब लेंगे प्रेजेंटेशन. कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप उठा करके उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. मैम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ उसका आंसर के साथ और पिक्चर के साथ प्रेजेंटेशन देना हुआ है. तो शॉर्ट आंसर्स है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद आंसर्स यहाँ ऑलरेडी डला हुआ है. लाइक व्हिच एनिमल केम अप विद द आइडिया टू बिल्ड द विंडमिल? Snowball came up with the idea to build this windmill. Who was the neighbor who gave the animals fake banknotes in exchange of a pile of lumber? Mr. Frederick gave the animals fake banknotes.
Which animal spreads rumors about sugar candy mountain? Moses, the raven, spreads. Who came up with the idea, concept of cannibalism? Old Major. Whose motto was "I will work harder"? Boxers. Who was the leader of Animal Farm? Napoleon. Whom did Napoleon choose to be his bodyguards? Napoleon chose the dogs to be his bodyguards. What was the name of the man who used to own the manure farm? Mr. Jones. What did Molly do in her spare time? Molly looked at herself in a reflection and wore her many ribbons. Which of the pigs were good at poetry? Minimus. What was Squealer good at? Squealer was an incredible speaker and could easily change someone's opinion. Whenever something went wrong in the animal farm, who was blamed? Sumol was blamed for everything that went wrong in the animal farm. तो highlights में help मिल जाता है तो आप समझ पाते हैं. Otherwise, जितने भी क्वेश्चन आंसर है रेलेवेंट लेसन्स के, अपने को आप प्रिपेयर करिए. इससे नहीं कि एग्जाम देना है, इसलिए भी कि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है. Yes, ma'am. अब प्रेजेंटेशन लॉन्ग आंसर की भी होगी. Summarize the story of Animal Farm. Sketch the characters of Snowball. Describe Boxer. What happened to him in the end? Who wrote the seven rules? How was it implanted? What were the animals tortured? How were the animals tortured by Mr. Jones? And did the animals look after the farm in a better way? उसके बाद कॉमन इंग्लिश इडियम्स हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको टाइम बहुत मिलेगा. आप जितने भी टाइम है और सब्जेक्ट्स भी आपके पास हैं, लेकिन इंग्लिश को छोड़ना नहीं है. प्रेजेंटेशन क्लास चलता ही रहेगा. Yes, ma'am. And now from the next class we'll take up idioms and phrases जो कि आपका सिलेबस में भी है. रेक्टिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस वो भी है. तो देखते हैं क्या होता है. स्टूडेंट्स को लग रहा है क्लास कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, आना छोड़ दिए. कंप्लीट हो गया सही है, लेकिन उसके बाद आपका बहुत कुछ बाकी रहता है ना. रिवीजन, प्रेजेंटेशन, डाउट क्लियरिंग, है कि नहीं? Yes, ma'am. चलिए that's it for today. I told नीतू उस दिन, नीतू फिर लापता है. This is Yes, bad. ma'am.